क्रॉस कला परे F1 आसला या तेणु दुटा F1 प्लांट जब क्रॉस करा है ए आसी कैपिटल टी ये गुटा आसीबो कैपिटल टी स्मॉल टी ये गुटा आसीबो कैपिटल टी स्मॉल टी ये गुटा आसीबो स्मॉल टी ये गुटा आसीबो तेणु फिनोटाइपिकली जो देखा जाए ये तीनटा टॉल प्लांट आसीबो से होमोजाइगस टॉल बा हेटेरोजाइगस टॉल तीनटा जाको टॉल कण गोटे आसी ड्वार्फ तो रेशियो आसला 3:1 तो दिस इज द फिनोटाइपिक रेशियो जो जीनोटाइपिकली देखा जाए माने जो प्लांट मॉर्फोलॉजिकल जेनेटिकल सेम ता माने ये गोटिए टॉल ये दीटा एका प्रकार रे ये होची गोटे तन 1:2:1 ये रेशियो डला जीनोटाइप रेशियो एटु नोट रे लिखि दी हाइची किंतु सर बुझे देते हाउ 3:1 द फिनोटाइपिक 1:2:1 ला जीनोटाइप रेशियो तनो एथि पय हेची द तीनटा मॉर्फोलॉजिकल टॉप बट जेनेटिकली डिफरेंट ओनली वन प्योर ड्वार्फ सो दे तो मॉर्फोलॉजिकल तीनटा टॉप तो रेशियो आसला 3:1 जो जीनोटाइपिकली देखा जाए ता ये गोटे प्योर टॉल दीटा हाइब्रिड टॉल गोटे प्योर ड्वार्फ तो 1:1 ये जो रेशियो आसला दैट इज जीनोटाइपिक रेशियो एटा अछि मोनो हाइब्रिड क्रॉस रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस माने यदि गोटे सिंगल कैरेक्टर को बेस करी क्रॉस होता है ता माने हाइट इज द कैरेक्टर एवं हाइट कैरेक्टर दीटा कंट्रास्टिंग गोटे टॉल गोटे होची ड्वार्फ सो बिकॉज हाइट इज द कैरेक्टर टॉल एंड ड्वार्फनेस इज द कंट्रास्टिंग यदि केवल हम कंसीडर करबा ताको हम कहबा मोनो हाइब्रिड क्रॉस यदि दीटा कैरेक्टर हम एट अ टाइम नबा ता माने हाइट ऑफ द प्लांट विथ कलर ऑफ द फ्लावर एका थरे दीटा कैरेक्टर को हम कंसीडर करबा द प्लांट विथ टॉल एंड रेड फ्लावर द प्लांट विथ ड्वार्फ एंड व्हाइट फ्लावर तो हम दीटा गछ बाछिबा गोटे प्लांट टॉल हेतो रेड फ्लावर कैरी करथिबो आ गोटे प्लांट ड्वार्फ हेतिबो एवं व्हाइट किंबा अन्य गोटे कलर से येलो जहा रेड रे कंट्रास्टिंग गोटे थिबो सिटी तो हम दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस बिकॉज टू कैरेक्टर्स with contrasting natures are crossed at a time that is dihybrid तो dihybrid cross ratio dihybrid cross चक्र पर पछरा आसो ता रेशियो खाली मन रखियो गोटे होची 9:3:1 तार फिनोटाइप रेशियो तार जीनोटाइप रेशियो आसो 1:2:4:2:1 1:2:4 बा 1:1:4:2:1:2:1 16टा घर सेठी आसो चक्र पर जीवित dihybrid cross जीवित से देखैबी ये होची तार माने बेसिक कांसेप्ट होची फिनोटाइप और जीनोटाइप भीतर होची या तो जानिया दरकार जे फिनोटाइप कोन और जीनोटाइप कोन एटा डिफरेंस बिटवीन पडियो बोली ए रेशियो गुडा मेंशन करा हिची कि बेसिक यदि एक मार्किया क्वेश्चन आसे बा के जो पचारिबो तो फिनोटाइप जीनोटाइप में डिफरेंस होची या द प्लांट्स विथ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी बट जेनेटिकली डिफर एला फिनोटाइप प्लांट विथ बोथ morphologically and genetically similar siena genotype then monohybrid cross and dihybrid cross already तुम कोई सालनी जे monohybrid mono means one taking one pair of contrasting character for artificial cross is known as monohybrid cross गोटिए पेयर रे contrasting character यदि हमें कंसीडर करबा ताको monohybrid cross कहबा taking two pairs of contrasting at a time हम दुईटा contrasting character carry करथा प्लांट को हम कंसीडर करबा सो दैट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो जस्ट अबे कहली 3:1 इज द फिनोटाइप रेशियो 1:2:1 इज द जीनोटाइप रेशियो बट इन केस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस 9:3:3:1 एला फिनोटाइपिक 1:2:1:2:4:2:1 ये हला तमरो ए जो 1:2:1 केमती सा चक्र बोर्ड काटले त बुझे देबी तुमको एठी बुझी परिबोनी से चक्र बोर्ड जाई से देखेबा तो ये हो तार जीनोटाइप रेशियो त माने सब डिफरेंट टाइप रे जो 1 अलगा टाइप रे 2 आउट अलगा टाइप रे थिबो से विभिन्न प्रकार तो 1 टाइप रे 1 2 3 4टा सिंगल कैटेगरी अछंती अलगा टाइप रे तो 2 2 करी से 4टा अलगा टाइप रे सब अछंती तो निर्दिष्ट जीनोटाइप थिबा प्लांट को काउंट करी तो बाहर कराइछ ता सेठी 4टा वैरायटी रे प्लांट आसीबो से टाइप से रेशियो बाहर तो द क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ जदि हुए सेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस कारण कैरेक्टर गोटे दैट इज हाइट तो गोटे कैरेक्टर हाइट एवं तार दिटा अल्टरनेटिव फॉर्म डाइहाइब्रिड क्रॉस सेमिति दीटा कैरेक्टर नियाइछ टॉल प्लांट विथ रेड फ्लावर
dwarf plant with white flower तार जीनोटाइप नि आइछि कैपिटल टी कैपिटल आर टॉल फॉर कैपिटल टी रेड पाइ नि आइछि कैपिटल आर dwarf नै आइछि स्मॉल टी व्हाइट पाइ नि आइछि स्मॉल आर तो प्योर लाइन दिटा माने होमोजाइगस कंडीशन ले प्रथम दिटा प्लांट अछि तापर कोन आसे चला सो देखिया देन कम टू द बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस तो बैक क्रॉस होछि where the cross made between the F1 with either of the parents जदि आमे पैरेंटल प्लांट रे जे कैपिटल टी ता से तो आउट रे जो स्मॉल टी हमको रिजल्ट आसेला हाइब्रिड रे इटा F1 when this F1 crossed back with any parents या क्षेत्र हो ता क्षेत्र हो जहां क्षेत्र क्रॉस कले डेफिनेशन अनुसार छडा बैक क्रॉस कहा जाए देखो जदि आमे ए प्लांट से हम क्रॉस करिवा मने करा जाय ये दुटा गामेट दबो दि प्रकार गामेट ये दिए तुम जानि छ कैपिटल स्मॉल टी हम ताको समिति क्रॉस न करे हम चक्कर बोर्ड रे कर दवा चक्कर बोर्ड सुविधा हो जे हम बोर्ड एपोर्ट साइड मेल प्लांट नेली एपोर्ट साइड बोले फीमेल प्लांट एवं यार गामेट दिटा कोन आसीबो ना कैपिटल यार गामेट आसी दिटा थोइ देली घरे तापरे कोन करिवि ना कैपिटल ओले दे जे घरे जे अछंती कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी तो ए जो प्लांट तुम रिजल्ट पाइलो एतरे से हाइब्रिड हो बा तमरो प्योर हो ये सबुडा टॉल पळेसला 100% पळेसला टॉल प्लांट तो वर्तमान हमें जानि पार ना जे ए प्लांट और ये प्लांट में डिफरेंस अछि बोली का रिजल्ट सब टॉल आछी बट द क्रॉस इज बैक क्रॉस as per definition when the F1 hybrid crossed back with either of the parents जे कोन सी पेरेंट्स का क्रॉस कर तो बैक क्रॉस पाजियो जदि हम जानिबा चाहू ए जो टॉलटा whether it's a pure or hybrid then we have to cross with this plant कारण या से क्रॉस कर कारण एटा जे तो प्योर टॉल से क्रॉस करछो तो यार जो कैपिटल टीटा सबड पस जाउची तो रिजल्ट सब टॉल पळे अछि तो हम जानि परनु ए टॉलटा भीतर कि डिफरेंस अछि ना नाही जदि हम यार डिफरेंस जानिबा चाहबा तला हम या से क्रॉस करबो पड़े so that when we want to test whether the F1 plant the pure or it is a hybrid, it is a homozygous or it is a heterozygous, then we have to cross with the recessive parent. So that is a test cross because we want to test whether F1 is a pure or not. That means when the cross made between F1 hybrid with their double recessive parents जदि डबल रिसेसिव पेरेंट्स से क्रॉस करा जाए स्पेसिफिकली सेही टेस्ट ऑफ पाजो टेस्ट क्रॉस तार अर्थ टेस्ट क्रॉस कम्स अंडर बैक क्रॉस सो टेस्ट क्रॉस इज आल्सो बैक क्रॉस कारण हमें क्रॉस बैक करछु आइदर द पेरेंट्स सहित सो टेस्ट क्रॉस इज आल्सो कम्स अंडर बैक क्रॉस बट बैक क्रॉस नॉट कम्स अंडर द टेस्ट क्रॉस क्लियर हो दिन छटा with either of the any parents that is the back cross जे कोन से पेरेंट्स तो क्रॉस करले दैट इज बैक क्रॉस किंतु डबल रिसेसिव पेरेंट्स का क्रॉस कला सेटा पा जाए टेस्ट क्रॉस देखो केमिति मने पूछ मने करो आ देखो खाता रे अछि तुमको नोट रे अछि देखियो मने बुझिया पई कहूची तुम नोट रे अछि किछ प्रश्न नाही जदि हम एटा को डबल रिसेसिव पेरेंट्स का क्रॉस करछु क्रॉस करले कोन आसबो देखो गामेट पर एटा सिखि जाउ चक्कर बोटा कैपिटल स्मॉल टी दला दिरा गामेट दला तापर तुम घर काट दबो बॉक्स पके दो चारटा घर आसलो एपट मारियो ऊपर गोटे साइड रे मेल गामेट गोटे साइड तो फीमेल गामेट जहां मेल नो तो यूज करता नहीं यार गामेट असला कैपिटल स्मॉल टी दितो तक आसीबो तो आसीला कोन कैपिटल स्मॉल टी वर्तमान रिजल्ट आसीला 50% टॉल 50% ड्वार्फ तो एट जना पड़ीगला दे प्लांट प्योर टॉल नुहे जेहेतु F2 रे ड्वार्फ प्लांट आसुची सो दैट मेंडल एक क्रॉस को कहले टेस्ट क्रॉस कारण एटा टेस्ट होउची प्योर नुहे बोली फर्स्ट डोमिनेंट टॉल से क्रॉस को प्योर टॉल से क्रॉस कले से रिजल्ट जानि हो नथिला कारण से कैपिटल टी रो गामेटा सबथरे पछौतला तो आउ थरे बुझो when the F1 hybrid crossed back with either the parents that is back cross when the cross made between
F1 with the double recessive parent, that is called test cross, because we want to test the F1 hybrid is a homozygous or heterozygous. प्रथम कही जे स्मॉल टी रो जो कैरेक्टरटा सप्रेस हे रहउची ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैपिटल टी डोमिनेंट फैक्टर काम करछु बोली एज रिसेसिव कैरेक्टर विशेष रहिची किंतु तार आइडेंटिटी से लॉस करे नाही जते बेले ताको नेक्स्ट जनरेशन चांस मिल जाए से जगह से एक्सप्रेशन कर जाए तण जेतु तार आइडेंटिटी से लॉस कर रहला तण F2 रे डॉर्फनेस कैरेक्टर एपियर कला से जे मेंडल कहले जे गोटे पर्टिकुलर फैक्टर रे बा गोटे पर्टिकुलर लोकस रे जो दीटा एलीली हेटेरोजाइगस फॉर्म रहे तो वन एलीली सप्रेसेस द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर वन सो दिस इज कॉल्ड डोमिनेंट एंड रिसेसिव फैक्टर तापर असला मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस व्हाट आर द लॉज जोडा मु तुमको कहउतली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ डोमिनेंस ए जो लॉ सो बाहर छी सो मेंडल कर दीटा एक्सपेरिमेंट हिची गोटे एक्सपेरिमेंट रे मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट सेथरे तीनटा लॉ से बाहर कर जंदी आउट थला डाइहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट सेथरे गोटे लॉ बाहर छी तो टोटल चारिटा लॉ से प्रपोज कर जंदी सो चारिटा लॉ को हम कहू मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस सो मेंडल परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन हेरिडिटी बाय यूजिंग गार्डन पी प्लांट on the basis of the result of his work a few fundamental principles were derived तेणु से तार जो एक्सपेरिमेंट पर तार वर्क रे बेस करी केतरा फंडामेंटल प्रिंसिपल से बाहर करचंती and Mendel was born in 1822 in Czechoslovakia he began his genetic experiment on P in 1856 रे से एक्सपेरिमेंट आरंभ करथिले and these experiment took 8 years for completion 8 वर्ष लागिथिला तो कंप्लीशन करिया पई and after 8 years से तार जो रिजल्ट so देथिले the result of his work were presented in a research paper गोटे रिसर्च पेपर से तक वर्क ता जो फाइंडिंग तंकर थिला सेटा देथिले सेटा एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन तार हेडिंग थिला या रिसर्च पेपर रे एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन जेतु से क्रॉस ब्रीडिंग करथले हाइब्रिड फॉर्मेशन करथले एवं रिजल्ट से पाइथिले तो लिखथिले एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडेशन तो मेंडल लेड द फाउंडेशन ऑफ द साइंस ऑफ जेनेटिक्स although the discovery of basic principles of heredity pratham introduction pattern ko kahithili he was the pioneer of the genetics the foundation of the genetics was led by Mendel then after Mendel further studies on genetics are expanded by other genetics other scientists but basic principles basic fundamental rules as proposed by Mendel so he considered the father of genetics so after his experiment he advocated 4 postulates including 2 important laws of inheritance चारिटा postulates थिला एवं दीटा important law थिला सेतरे गोटे law of segregation आ गोटे law of independent assortment एवं 4 postulates थिला law of dominance law of principles of dominance principles of यूनिट फैक्टर जो सुथिला चारिटा पोस्टुलेट्स थिला तो पोस्टुलेट्स 1 ने थिला प्रिंसिपल्स ऑफ पेयर फैक्टर चारिटा जो पोस्टुलेट्स सेते फर्स्ट पोस्टुलेट्स होची प्रिंसिपल्स ऑफ पेयर्ड फैक्टर सो मेंडल रियलाइज्ड दैट ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर जोटा कि कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल आर स्मॉल आर दुईटा फैक्टर मेंडल सेते फैक्टर कहउतले सेटा जो वर्तमान तमे जीन कहउछो सेते फैक्टर कहउतला कारण से समय जीन टर्मटा कॉइन हेइ नथिला बहुत परे जोहानसन बोली जने टर्म जीन को कॉइन करथिले मेंडल कर फैक्टर रो मीनिंग जहा याकर जीन लो मीनिंग से या किंतु सही फैक्टर ना परवर्त समय जीन में कहिलु कि मेंडल सही समय फैक्टर कहउथले टी इज द फैक्टर फॉर टॉलनेस स्मॉल टी द फैक्टर फॉर ड्वार्फनेस सो दैट टर्म was used by Mendel as a factor so Mendel each character controlled by a pair of unit factor जे कोन से कैरेक्टर टॉल हो बा रेड कैरेक्टर हो बा राउंड शेप हो एनी कैरेक्टर कंट्रोल बाय 2 फैक्टर्स पेयर कंडीशन से रहे एंड दिस पेयर इज नाउ नोन एज allele and is defined बर्तन सेटा कहू allele and that pair of contrasting character so thus for a character such as height there would be 2 contrasting character tall and dwarf सब तरह से जे कोन से कैरेक्टर नबो त दुईटा कंट्रास्टिंग allele आसीबो कंट्रास्टिंग नेचर आसीबो जेमति कलर रे कहली रेड व्हाइट
shape रे कहली round and shrunken, height रे कहली tall and raised. So in this way, so if a cross is made between two homozygous parents, each parent have two similar unit factors. कारण सर ट्रू ब्रीडिंग रे आमे देखु कैपिटल टी स्मॉल टी अछि दिरा देखो ट्रू सिमिलर यूनिट आसीबो सेते कैपिटल टी आसीबो टू स्मॉल टी आसीबो अदर चॉइस नै बिकॉज़ बोथ आर होमोजाइगोट. सो ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट विल हैव टू यूनिट्स कैपिटल टी यदि ड्वार्फ नबो तार स्मॉल टी. सो कैपिटल टी फॉर टॉलनेस, स्मॉल टी फॉर ड्वार्फनेस. सो ए थर्ड कंडीशन इज आल्सो पॉसिबल where an organism has one unit factor or allele for one character. तामाने जदि कैपिटल टी स्मॉल टी आसे सेठी आउ गोटे कंडीशन आसीला से कैरेक्टर आसीबो टॉल किंतु दीटा अल्टरनेटिव फॉर्म सेट रहिला गोटे कैपिटल टी गोटे स्मॉल टी, वन कैरेक्टर टॉल वन कैरेक्टर फॉर ड्वार्फ बट एक्सप्रेशन इज टॉल ड्यू टू डोमिनेंट. तो ये जो आसीला रिजल्ट ये होची पेयर तामाने एतरो मोटा मोटी पर मेंडर कहले for the expression of a single character, a paired alleles or paired factors always remain associated together. So capital T हो, small t हो, बा capital T small t हो, ये अलग होती है. तापर असला principles of dominance. Principle of dominance already discussion से law of dominance आउ recessive रे से कथा हम कहि छै से कथा एठले खाइ छै. When two homozygous individuals with one and more sets of contrasting characters are crossed together which appear in the F1 generation are always dominant character. One or more sets of contrasting character. तामाने दीटा कथा हम तुम कहूची बर्तन दुटे एग्जांपल तुम देइछु दीटा एग्जांपल तुम दउची जो से कहला टू और मोर देन टू contrasting. तामाने जदि हमें कैपिटल टी स्मॉल टी नबा एते दीटा contrasting character अछि रिजल्ट किंतु टॉप. आउ गोटे एग्जांपल होची कैपिटल आर एटी दीटा कंट्रास्टिंग माने दीटा अलग अलग कैरेक्टर से भूल कहली कैपिटल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर जदि इमिति अछि दीटा चारिटा कंट्रास्टिंग अछि माने हाइट रो दीटा कंट्रास्टिंग अछि कलर दीटा कंट्रास्टिंग अछि रिजल्ट आसे टॉल रेट. तणो से जो दीटा कंट्रास्टिंग थाउ बा गोटे कंट्रास्टिंग थाउ किंतु एक्सप्रेशन आसे गोटे ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंस सेठी से कहूची. So these principles can be summarized as the character of an organism are under the control of Mendelian factors. एवं सबु character Mendelian का factor द्वारा control होची and that factors always occur in a pair and in a pair containing two dissimilar factors. एवं सही pair दीटा dissimilar factors रहूची and only one factor dominates and expresses itself while the other remain unexpressed. So those characters capable to express in a heterozygous state are called as dominant and other character which unable to express that is known as recessive. So these principles जो आसिला that is the postulate 2 रे आसिला that is the principles of dominance. दीटा प्रथम आसिला the character controlling factors are always remain in the paired condition. This is the first postulates. Second postulate आसिला the principles of dominance in a heterozygous condition when two different allele remain associated with each other in together, only one expresses and other one unable to express. So those expresses that is dominant and unable to express that is called recessive. तापर असला law of segregation. Law of segregation से कहूची जे जदि हमें दीटा different allele remain associated with each other in F1 and then cross with each other. So during the formation of gamete, the two allele segregated independently but segregated separated from each other without any contamination. ताका भितरे कोनसी intermixing हो नाही. दीटा पाखापाखि रहउजन सत किंतु दीटा कैरेक्टर भितरे ब्लेंडिंग होउनी. ये ता सहित किछ मिक्स करनी ता सहित किछ मिक्स करनी सो दैट F1 रे जो रिजल्ट आसुची से टॉल ड्वार्फ आसुची किंतु डिफरेंट रेशियो आसुची टॉल ड्वार्फ व्यतीत अन्य किछि आसु नाही. जदि सारा इंटरमिक्सिंग होता ताले टॉल ड्वार्फ रो मझामझी किछि अन्य रिजल्ट आसंता सिमिति रिजल्ट किछि आसु नाही. तेणु मेंडल ता कहले प्यूरिटी ऑफ गामेट ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. So two factors or traits which remain together in individual do not get mixed up but keeping their identity distinct. Though two different allele remain together,
without losing its identity, without any contamination, without any intermixing, they simply separated from each other at the time of gametes and get randomly distributed to different gametes. तो ସେଇଟା को से कहूची purity of gamete तो ताको से कहले law of segregation. तो this law जोटा एक तुम बुझेली तो दीटा गोटे लोक से रहउची but at the time of gamete formation they simply separated or simply segregated from each other without any contamination. यदि इंटरमिक्सिंग होता बा किछ कंटामिनेशन होता ताले से टॉल डुआर पर रिजल्ट न आसी आ थर्ड टाइप रे पड़िया संता जेमि परवर्ती समय आसी जे एग्जांपल जत हम जीवा पछु कहबी सेटी इंटरमिक्सिंग हेछि कि जगह रे मेंडल कर सेटा हे नाही इंटरमिक्सिंग रिजल्ट अलगा आसी आफ्टर मेंडल से कथा आसीबो पोस्ट मेंडेलियन कांसेप्ट से कथा आसीबो जोटे को डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस एसो जिंस आसीबो सेटी पछरे कहबी कि मेंडल का जो प्रिंसिपल थिला सेतरे कथा आसी नथिला मेंडल लकी थिले गार्डन पी प्लांट भीतर कन्फाइंड हो जाइथिले जत एक्सपेरिमेंट गार्डन पी प्लांट बाहर को जाइछि रिजल्ट डिफरेंट हेछि मेंडल का जो रेशियो सेटा सब अलगा हो जाइछि मेंडल कर लॉ सब बाहर माने से काम करू नाही तो डिफरेंट रिजल्ट आस जाउछि तो मेंडल से दृष्टि लकी थिले कारण तांकर एक्सपेरिमेंट गार्डन पी प्लांट पर कन्फाइंड थिला एवं गार्डन पी प्लांट रे सिमिति किछि डेविएशन आसी नथिला. सो व्हेन ए डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील come together in a hybrid after crossing two plants having contrasting characters, they do not mix together. जोटा कि तुम कहली without any intermixing. So when a dominant and recessive allele come together in a hybrid, दुईटा allele one dominant capital T small t जोटा तुम कहूची recessive allele come together in a hybrid after crossing two plants capital T small t संग cross कला पर hybrid आसिला. तो having contrasting characters that do not mix together. गोटे जगह रे दुईटा contrasting character रहिला but intermixing हला नाही. So they separate into two different gametes in equal number. एवं जो gamete formation समय they separated from each other and only one type of allele. Each gamete have only one, either capital T रहिबो or small t रहिबो. दुईटा gamete either or condition रहिबो. से capital T करि पारे गोटे small t करि पारे. तो separation of two allele of a gene during gamete formation takes place usually due to the separation of homologous chromosome during meiosis. तो meiosis process रे जेमिति तमर homologous chromosome एनाफेज स्टेज रे सेपरेशन होची तो एक्जेक्टली सेही वे रे विरा गामेट सेपरेशन होची. तो ईच ऑर्गन रिसीव्स टू एलील्स, वन फ्रॉम द मेल गामेट अनदर फ्रॉम द फीमेल गामेट. एवं सेटि जो ऑर्गन आसीबो F2 जनरेशन रे से गोटे गामेट मेल पाखरु कैरी करियो गोटे गामेट फीमेल पाखरु कैरी करियो. सो इंडिपेंडेंटली द गामेट्स independently the alleles are separated from each other without any intermixing or without any blending of characters. So these three postulates derived from Mendel's monohybrid cross experiment. ये जो 3:1 रेशियो जो तुम कहउथली जो क्रॉस चेकर पर काटी दिली टिका गुरु सेही थ्रू ए तीनटा पोस्टुलेट्स आछि सेटा को हम कहउछु मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट.